हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू S1FX। तो आज मैं 10 मिनट पहले आया हूँ और इसका रीज़न सिंपल है क्योंकि 9:30 का जो ड्राइवर है ना, कई बार वो अच्छे मूव्स दे देता है। तो मैं सोच रहा था कि देखते हैं ड्राइवर्स को ट्रेड कर पाएंगे, अगर तो करेंगे। बट जब मैं अभी एनालिसिस कर रहा था तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ट्रेड्स थे वो, मतलब 8 से 9 के बीच में बने थे। फॉरेक्स में भी एक अच्छा ट्रेड था, ऑल दो वो ऐसा कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। इट्स लाइक कि थोड़ा डीपर रिट्रेसमेंट दे रहा है ये। बट अगर हम ध्यान से देखें ना तो यहाँ पे स्ट्रेंथ स्विच हो गई है। 3 मिनट ही है ना। देखो यहाँ स्ट्रेंथ स्विच हो गई है अब। तो देखो, ये नीचे जाएगा तो इसको ऊपर जाना चाहिए और इसको भी ऊपर ही जाना चाहिए। लेट्स सी। मेटल की बात करें तो मेटल में भी एक अच्छा सेटअप यहाँ पे बन रहा था, बट वैसे मतलब एंट्री लेना थोड़ा डिफिकल्ट था इसमें, क्योंकि कंसोलिडेट करके सीधा ब्रेकआउट दिया था ये। तो एंट्री लेना थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट था। अगर ले भी लेते कोई यहाँ पे एंट्री ना, तो दिक्कत में ही आता, मतलब बहुत देर तक कंसोलिडेट कर गई थी मार्केट। और इंडाइसेस में भी एक ट्रेड बन रहा था 8:30 के अराउंड, बढ़िया ट्रेड था ये। मतलब मैं देख रहा था, एनालिसिस कर ही रहा था मैं उस वक्त। तो ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आफ्टर दिस कैंडल और आफ्टर दिस कैंडल हम एंट्री ले सकते थे। तो ये एक अच्छी ट्रेड थी। मतलब वैसे तो हम नहीं करते, 9:30 के पहले हम ओपन भी नहीं करते चार्ट। मतलब एनालिसिस वगैरह करके छोड़ देते हैं। तो ये अच्छी 1:3, मतलब मिनिमम 1:3 तो इसमें आराम से बुक किया जा सकता था। ठीक है, तो ये एक अच्छी ट्रेड थी। खैर चलो, हम जब जस्ट ये एनालिसिस करते टाइम ये सारी दिख रही थी ट्रेड्स, अच्छी ट्रेड थी। SMT फिल था और क्लियर ड्रॉन लिक्विडिटी था, सब अच्छा था इसमें। कोई दिक्कत नहीं थी ये। देखते हैं अभी अब 9:30 पे हमें क्या क्या मिलता है। हम्म देखो, मार्केट क्लीन अपने एक ड्रॉन लिक्विडिटी पे जा रही है। तो ये सबसे ज़्यादा लैगिंग एसेट है YM। तो YM भी ना, यहाँ पे इसके ये ड्रॉन लिक्विडिटीज हैं। ये इस गलती गलत ये वाला। तो आप देखोगे कि ये भी कंटिन्यू ओपन लो फर्स्ट एंड देन ट्राइंग टू कंटिन्यू इट्स मूव हायर। अगर हम इसको कंपेयर करें ना RTY से, तो RTY भी कंटिन्यूएशन के मूड में है। देखो, ओपन ओपन ये कंसोलिडेशन में था, मैनिपुलेट किया इसने, और वापस से आप देख सकते हो एक क्लीन वी शेप रिवर्सल, मतलब कंटिन्यूएशन की तरफ आ रहा है। ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इसका ड्रॉन लिक्विडिटी है, तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये ड्रॉन लिक्विडिटी है, तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस इसमें भी अभी मूव है। ठीक है, हम ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ तक चला जाएगा, बट मूव है इसमें अभी पेंडिंग। ये फेयर वैल्यू कैप इसको आई डोंट थिंक ये रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि RTY भी देखो आप इसको डिसरिस्पेक्ट कर गई है। यही वाला सेम फेयर वैल्यू कैप है ना, क्लीन डिसरिस्पेक्ट कर गई है, मतलब सारे एसेट्स इसको डिसरिस्पेक्ट करके कंटिन्यू कर गए हैं ऊपर की तरफ। तो ये वेरी लेस चांस की ये इसको रिस्पेक्ट करेगी, या हो सके यहाँ कंसोलिडेशन में चली जाएगी। एक अच्छा सेटअप ES में बन सकता है, क्योंकि ES इस ड्रॉन लिक्विडिटी के बहुत नज़दीक है, और YM NQ भी क्लीन फेलिंग टू मैनिपुलेट सॉर्ट ऑफ सिनारियो क्रिएट कर रहा है। देखोगे ना, तो ये देखो, ये क्लीन मतलब फेल कर रहा है, इसको मैनिपुलेट नहीं कर रहा है। तो फिर हमको यहाँ पे ES कैचअप करता हुआ दिखेगा यहाँ पे इसको। ठीक है, हो सकता है ये 9:30 पे कैचअप कर जाए। ठीक, तो देखते हैं क्या सिस्टम, क्या सीन बन रहा है। देखो, ये ना देखो, हायर हाई थोड़ी बना रही है ये ES में ना, ऐसे ES भी और NQ भी सबको, मतलब ऐसे 9:30 पे ना एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल सकता है। आप देखोगे कि
1 आवर में हमारे पास पी 1 आवर पे नहीं है आई थिंक ना, 30 मिनट पे है। 30 मिनट पे हमारे पास क्लीन पीएसपी है, 2 स्टेज क्रैकिंग कोरिलेशन है, सब कुछ अच्छा है मतलब कॉन्टिन्यूएशन के लिए। ठीक है, बट बात ये है ना कि ऑलरेडी मार्केट कंटिन्यू कर गई है 1 2 3, मतलब कैंडल 1 कैंडल 2 कैंडल 3 4, मतलब अच्छा कंटिन्यूएशन कर गया है। तो हम यहाँ एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। ठीक, तो ऑलरेडी एक्सपेंड कर गई है मार्केट, तो वी विल वेट फॉर अ 9:30 मैनिपुलेशन। तो 10 AM के अराउंड हमको एक एक यहाँ पे जैसे 9:30 मैनिपुलेट कर देगी, तो एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाएगा ऐसे, लेट्स सपोज। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यूएशन देखेंगे। ठीक, या देखते हैं। ईएस में तो खैर मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो है ना, क्या कहते हैं उसको, स्प्रेड बहुत हाई होता है यहाँ पे, तो ट्रेड बनती नहीं है ढंग की सीएफडी फर्म में। ओके, देखते हैं मेटल्स वगैरह में भी मूव। ओ भाई साहब, मेटल्स में भी मूव था यहाँ पे, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो वापस से ना, एक देखो ये मैंने लगाया हुआ था, ये देखो कंटिन्यूएशन दे रही है वापस से ये, क्योंकि ये नीचे जा रही है ना यार, रिलेटिव इक्वल लोज हैं प्रेजेंट, तो ये भी ठीक जा रही है, ये अच्छा अच्छा कर रही है। मैं सोच रहा था एक बार, क्योंकि यहाँ पेंडिंग ऑर्डर लगा दूं क्या, फिर मैंने कहा रहने दो यार, 9:30 के पहले ट्रेड नहीं लेना है ऑलरेडी। 9:30 के पहले अगर आप लोगे ना, तो आप देखोगे कि कई बार लॉसेस हो जाएंगे आपको, फिर साइकोलॉजिकली वो अच्छा नहीं होता है। विनर्स हो जाएंगे तब तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब लॉसेस होंगे ना, तो आपके टाइमिंग से पहले साइकोलॉजिकली आप अच्छे जोन में नहीं रहोगे। इट्स बेटर कि भाई 2 घंटा बहुत हो जाता है यार, 2 घंटा ट्रेडिंग काफ़ी हो जाता है, ठीक ठाक मूव्स मिल जाते हैं। ये क्लीन सेटअप था, 2 स्टेज क्रैकिंग कोरिलेशन एसएमटी फिल सब बढ़िया था यहाँ पे, लेकिन वही था ना, ये टाइमिंग मेरी नहीं थी। ये ओपन लो फर्स्ट क्लीन रिवर्सल एक्सपेंशन, तो एवरीथिंग वाज लुकिंग गुड इन दिस ट्रेड। यहाँ पे देखो एसएमटी भी था नीचे से, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये देखो एसएमटी भी था यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 स्टेज क्रैकिंग कोरिलेशन था इस फेयर वैल्यू गैप से, तो एवरीथिंग वाज गुड। बट बात वही थी कि मेरा टाइमिंग नहीं था ये, तो इसमें कोई कुछ मतलब नहीं बन रहा है। 2 मिनट में हमारे पास 2 मिनट में 9:30 ओपन होने वाली है, लेट्स सी क्या होता है। होना क्या है, बहुत मतलब वन वन डायरेक्शनल मूव, मतलब यहाँ तक जाने का हमको दिख रहा है। अगर ये मैनिपुलेट नहीं करती है, देखो मैनिपुलेशन तो आ चुकी है यहाँ पे भाई, अगर ईएस की बात करें तो मैनिपुलेट तो हो चुका है, अब क्लीन ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग है। ठीक है, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि हमको एक वन साइडेड मूव देखने को मिल जाए। बट हाँ, ये भी थोड़ा देखना होगा कि मार्केट 2 3 4 कैंडल एक्सपेंड कर गई है, तो वो चीज़ थोड़ा नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम लोग। बाकी देखते हैं। आरटीवाई को अगर हम देखें ना, तो देखो आरटीवाई के साथ एक पीएसपी क्रिएट कर रहा है मार्केट। देखो आरटीवाई भी अपने ड्रॉन लिक्विडिटी के पास पहुंची हुई है, फेलियर स्विंग से। देखो ये जो मूव आ रही है ना, ये अच्छी चीज, ये अच्छी बात है, क्योंकि हाँ, ये फिर से हमारे पे यहाँ पे 2 स्टेज क्रैकिंग कोरिलेशन देखने को शायद मिल जाए, कि 25 सेकंड में ये क्लोज होने वाली है। और आई डोंट थिंक यहाँ पे हमको वापस से एनक्यू अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को हिट करके नीचे रिट्रेस कर रही है। मार्केट ओपन हुई सीधा। हम्म, सीधा ओपन हुई, कंटिन्यू कर गई मैनिपुलेशन, क्योंकि पहले हो चुका था इसका। बाकी देखते हैं, ये कैचअप करने की कोशिश कर रही है ना इसको, देखो ये सबसे लैगिंग एसेट था, ठीक है, सबसे नीचे था ये, अब ये इसको कैचअप करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अदर मार्केट्स यहाँ पे हैं।
इस हाई पे हैं, तो ये देखते हैं। बट ये भी ना अपने ऑल टाइम हाई को हिट करके रिट्रेसमेंट दे रही है, तो देखेंगे, वेट करेंगे। हम्म। हम्म, पता नहीं आज नींद क्यों आ रही है। तो 9:30 ओपन होता है ना, तो यार मैं कहने को कि ऐसे फॉरेक्स में कुछ होता नहीं है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ ना, तो फॉरेक्स में भी भाई डीपर मूव आ जाती है। जैसे देखो, ये ये देखो, इसको ब्रेक किया ना, तो अब देखो ये इतना डीपर मूव आ रही है, ये डीपर मूव है। यूजुअली हम ऐसा मूव प्रेफर नहीं करते हैं, बट आप देखोगे कि अगर आप एंट्री वेंट्री लगा के बैठे रहोगे ना 9:30 पे, तो आप देखोगे फॉरेक्स में भी ठीक ठाक मूव दे देता है। ये एक दो कैंडल ही देगा, ज़्यादा नहीं देगा, बट देता है। तो अगर आप फॉरेक्स भी ट्रेड करते हो ना, तो थोड़ा रिस्पेक्ट किया करो 9:30 की। एकदम से ऐसा नहीं करना है कि 9:30 आई तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है 9:30 से। ये देखो, यहाँ पे ना हमारे पास एक पीएसपी भी क्रिएट हो रहा है। तो अगर ये इसके लो को लेता है ना, तो हमारे पास एक टू स्टेज एसएमटी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन बात ये है ना कि की लेवल क्या है यहाँ पे। की लेवल तो कुछ है, सच है नहीं यार। एक्सपेंशन मोड में है मार्केट ऑलरेडी। नीचे गिर रही है, ये ऊपर जा रही है, ये पीछे रिवर्सल दिया है, तो सब कुछ ठीक नहीं यार। कहाँ है, कोई पीएसपी तो नहीं है। ये तो वाइट है, ये भी वाइट है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। जहाँ पे एक पीएसपी है, लेकिन कोई ऐसा कुछ ऐसा एस सच की लेवल में बताऊँ तो यही है, अपोजिंग कैंडल है बस। और देखेंगे ना अगर ध्यान से, हम तो यहाँ स्ट्रेंथ स्विच भी दिख रही है हमें। ठीक है, जीयू कंटिन्यू करे ऊपर की तरफ, यहाँ पे हमारे पास फेलियर स्विंग्स पेंडिंग है। देर इज़ अ चांस कि हम जीयू में कुछ ट्रेड्स देख सकते हैं अगर ये। तो यार बहुत कंटिन्यू कर गई है ये, नहीं ये 1 आवर का पहले ही कंटिन्यूएशन है ये। तो अगर यहाँ पे सेल जाएगा, देखते हैं थोड़ा। हेलो अमन। अच्छी ट्रेड्स बन रही थी, 8 to 9 के बीच में अच्छी ट्रेड्स बन रही थी। बट वही है ना बात कि आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे ना, तो कितनी भी अच्छी ट्रेड बने, कुछ भी बने, इट डजेंट मैटर। आप एट द एंड ऑफ द डे लॉस ही लेके जाओगे। हेलो हेलो दिवाकर, सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पता है। एट द एंड अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे ना, तो चीज़ें फिर ठीक नहीं होंगी। अभी देखो क्या हो रहा है ना कि ये कंटिन्यू कर रही है लीडिंग एसेट, और जो लैगिंग एसेट है ना ये नीचे जा रही है। तो ऐसे केस में क्या, और मिडिल एसेट देखो, मिडिल एसेट कंसोलिडेट कर रही है। जब लीडिंग और लैगिंग बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएंगे ना, तो जो मिडिल एसेट है वो कंसोलिडेट कर जाएगी, क्योंकि इसको नहीं पता फिर ऊपर जाऊँ कि नीचे जाऊँ, किसको फॉलो करूँ। ठीक है, तो ये सिनारियोस तब होते हैं जब ये दोनों एसेट्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे अभी जा रहे हैं। ठीक है, बट हमको कहीं ना कहीं पता है ये चीज़ कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है ना वो बुलिश है। ठीक है, ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है। कहीं ना कहीं हम
अगर आप देखोगे तो ये 30 मिनट के साथ में पीएसपी भी क्रिएट कर रहा है आरटीवाई के साथ। ठीक, तो हम थोड़ा वेट करेंगे इसके ना मैनिपुलेशन का। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ये एस एम टी भी क्रिएट कर रहा है आरटीवाई के साथ कर रहा है, टू स्टेज क्रैकिंग कोरिलेशन क्रिएट कर रहा है। थोड़ा हम इस पर नज़र रखेंगे। देखो 1 आवर पे भी है, देखते हैं 1 आवर वगैरह पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी है, जो जो कि वाई एम जिसको हिट करने की कोशिश कर रहा है। देखो ये फेयर वैल्यू गैप है ना यहाँ पे, ये देखो। तो यहाँ पे हमारे पास एक एस एम टी फिल, हाँ बिल्कुल डिकपल्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एस एम टी फिल हुआ है यहाँ पे हमारे पास। नाउ वी विल सी कि यहाँ पे हमको कुछ रिवर्सल वगैरह मिलता है तो हम देखेंगे। हम 3 मिनट पे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो टू स्टेज क्रैक इन कोरिलेशन तो हमें मिल रहा है। बट बात ये है ना कि खाली टू स्टेज क्रैक इन कोरिलेशन पे एंट्री थोड़ी ले लेंगे हम वेट करेंगे ना उसका। जैसे देखो यहाँ पे रिवर्सल आया ना, एग्जैक्ट देखो ये चीज़, इसका वेट कर रहे थे हम कि यहाँ पे क्लीन वी शेप रिवर्सल दे, ताकि हम बाइंग की तरफ जा सके। क्योंकि देखो एस एम टी फिल तो आ गई है, बट हमको वो नहीं मिला है ना कंटिन्यूएशन, कि कंटिन्यू हम करें। तो वो तो तब हम लेंगे ना जब हमको यहाँ पे कुछ देखो। इट वॉज़ अ गुड ट्रेड, मैं लेता नहीं हूँ इसमें, ऑल दो इट वॉज अ गुड ट्रेड। क्लीन हमारे पास यहाँ पे ड्रॉन लिक्विडिटी है पेंडिंग, देखे ना। तो बट वेट करेंगे हम थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे कि जैसे देखो एनक्यू तो कंटिन्यू कर रही है ऊपर की तरफ, बढ़िया, अच्छा है वो। और ये जो लैगिंग एसेट्स हैं ना, ये देखो ये भी अपना कंटिन्यू करके इसको टैप करके, ये बहुत बढ़िया, मतलब ये बिल्कुल प्रिडिक्टेबल था, इसमें कुछ था ही नहीं। बाकी चलो देखो ये भी कंटिन्यू कर रही है, बिल्कुल फेल टू मैनिपुलेट कर रही है। तो देर सवेर ये भी कंटिन्यू करेगी। बट हाँ, द थिंग इज़ दैट कि हमको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि देखो यार ये ना बिल्कुल ही अपोजिट साइड ऑफ दिस रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बाइंग क्या करने के लिए थोड़ा वेट करना होगा, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है। लास्ट ऑप्शन if NQ does not reverse out of previous day high, then we can look to trade YM till previous day high. It is likely to play catch up. We will look at एग्जैक्टली वही हम भी सोच रहे हैं। एग्जैक्टली जयंतो भाई, वही हम भी सोच रहे हैं। ये फेल टू मैनिपुलेट करेगा तो ये कैचअप करेगी, बस वही हम भी इसी का वेट कर रहे हैं। तो आज थोड़ा मतलब इजी इजी है, ठीक है डे। न्यूज़ कहाँ है, आज तो नहीं है न्यूज़ कोई, ट्यूसडे है। ओ नहीं, आज तो कोई न्यूज़ है नहीं। आज आज तो नहीं है कोई न्यूज़। जयंतो भाई कहाँ देख रहे हो आप, इसको देख रहे हो क्या? आज नहीं है कोई न्यूज़, मतलब कहीं और से देख रहे हो क्या यार? ये तो मेरे तो नहीं दिखा रहा है यहाँ कोई न्यूज़। 2 दिसंबर आज ही है ना, 2 दिसंबर। हम्म, 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 कोई बात नहीं, होता है, क्या कर सकते हैं भाई। इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना यार, इट्स नॉट अ जोक कि यहाँ पे स्ट्रेंथ स्विच देखने को मिल रहा है मुझे, इट्स लुकिंग गुड। उसका नीचे yeah, I can speak in English as well, but most of my viewers are like like Hindi native speakers, so that's why I used Hindi language. Earlier, I used to make videos on English, but I did not get good response, so that's why I switched my language.
See, that is why I always say that whenever you want to take a trade at around 9:30, always wait for another CIST. It doesn't matter whether it's forex, indices, or metals. You will always get some good reaction around 9:30. So if you are about to take trade around like 9:30, then wait for its opening. Otherwise, like if you are very much sure the market has manipulated the key level, then only take trade at around 9:30, because otherwise, small opposing candles cannot handle the volatility of 9:30. See, here we can also get like let's suppose NQ loses its strength, and also what we can see that NQ will fall down, and then ES can also YM can also continue its move to the down. Then we can get this scenario as well. But I'm not that the happening of that scenario is very less. We will wait. We will wait for YM. Once we get a strength switch here, then we will be sure that it will catch around its intraday high. Not intraday high, but it's like yeah, intraday high. Yes, yes, yes. Because the low has already been created. So right now we are in a retracement phase. We will wait. We will wait. We can also see that like we can get some sort of strength switch here as well. If we get a strength switch in NQ, then we can get a bearish move. We need to wait. But based on the context, a better entry will be a buying entry, because we have open low first. You can see that the market has created its low of the day. Now we are getting expansion. Market just failing to manipulate all these highs. We will wait to see. The context plays a very big role. If your context is good, then like we can get easily a good trade. So here we are seeing a continuation of the move. That's a good thing. We will wait. We will wait. In RTY, I think the SMT fill has been violated. The SMT fill which I had marked earlier, like you can see that RTY has also hit this key level, and now we are seeing some sort of like manipulation to the upside. So we will wait. We will I don't see, if you want to take entry in like 1 minute time frame, then always take continuation entry, not a reversal entry. Reversal entry means I don't want to take a entry where we get just a CIST. No, that will not be a high probable trade. Just wait for another like a gap, and once market hit that gap and we get a continuation entry, then this will be a high probable entry. So we will wait, because in 1 minute you can easily get a CIST, and it will just invalidate your CIST and will take your SL. So try to take continuation entry if you are taking trade in 1 minute. Here in NQ we are not seeing any sort of weakness, so here we are getting a strength switch. See, this is making bigger bullish candles compared to this. Oh no, it's yes, we are seeing some sort of a strength switch, but we also need to keep in mind that if we get a strength switch here, then also like it will catch up to YM also as well. So we cannot deny this fact as well.
because we can see that we have, but again the thing is that it has already created the low of the day, so after creating the low of the day we are getting this sort of move, so the chances of reversal is less. Here we did not get any gap. Okay, so let's suppose I get a CIST at around this area, then I would like to see some continuation move, then only we can look for trade, otherwise no. Market is trying to continue, but let's wait for perfect. You can take entry, like it depends, like you can take entry as well, like it's a good one. You can take entry from here also, it's a good entry. We have also got the strengths, which everything is looking good, but still like I want to market is completely decoupled. So for me, I would like to for me, I would like to wait for continuation at this, because we are catching a reversal. So it's better to wait for a continuation for me as well. Like it depends. It like, I also take these sort of entries, but not today. Don't do it. Don't do it, Aman. Because it doesn't matter how. Let's suppose market continue from here and I could not get the entry, then that's not good. If your plan supports that you do take entries in these sort of cases, then you should take. Like, if you are here in my stream, just look how I analyze the chart, like how I do my analysis, but don't try to like copy the trades. And here what I can see that NQ is losing its strength. That's good. Time to continue. That's good. I'm opening my MT5 now. Mhm. Hmm. Mhm. Okay, we do have a strength switch, nice strength switch. Okay, here market is trying to
retrace, and we are seeing here a continuation. So once we get uh, order block, then can look for a trade. We will wait for EIST. Hmm. I have placed one trade here. Get around this area. Let's see. It could continue its move. Hmm. SL is not small, like 41. It's not that small. We have failure sinks here. We are now. What I would like to see, I would like to see that we see some. I don't want to see this like this deeper retracement or reversal. I just want NQ to hold its ground, or like see some slow move or continuation, so that YM can also catch up the same area. Let's see. Hmm. Hmm. पता देखो, ट्रेड कॉपी करने से दिक्कत ये होती है ना कि मुझे पता है कि अगर मैं 4 लॉसेस भी लूंगा ना तो मेरे विनर्स कब आएंगे, ये मुझे अच्छे से पता है। दिक्कत क्या है ना कि जैसे मैं लॉस लूंगा ना, तो जैसे आपको नहीं पता है मेरी साइकोलॉजी क्या चल रही है,
ठीक है, मैं अगर इसमें लॉस भी ले लूँ तो मैं वो मुझे पता है कि मैं को कैसे इसको डील करना है, कैसे इससे बाहर आऊँगा। लेकिन आपको नहीं पता ना, क्योंकि आप कॉपी कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि वो क्या चलेगा, कैसे मैं इससे बाहर आऊँगा अगर लॉस ले भी लिया मैंने यहाँ तो। या मेरा कौन सा लॉस है ये, जैसे मुझे पता है कि 3-4 लॉसेज अगर हो गए नहीं ना रो, तो मेरे को पता है कि चौथा पांचवा छठा ट्रेड मेरा विनर ही जाने वाला है। ठीक है, बट आपको नहीं पता है कि ये मेरा कौन सा वाला लॉस है। तो उस केस में क्या होगा ना कि आप मतलब परेशान हो जाओगे, मतलब आपको लगेगा कि भाई मैं तो लॉस ही पे लॉस लिए जा रहा हूँ, मैं तो मेरा तो विनर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो साइकोलॉजी, वो एक साइकोलॉजी होती है, वो नहीं कॉपी करना चाहिए ऐसे ट्रेड। आप देखो एनालिसिस, मैं मेरे जितने भी क्वेश्चन आप पूछते हो मैं 99% जवाब दे देता हूँ, शायद एक आध क्वेश्चन कभी छूट जाए तो, दिखता नहीं है तो छूट जाता है, नहीं तो मैं अगर देखता हूँ तो उसका रिप्लाई जरूर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी ना अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा था आज, पता है, कर रहा है, मतलब कर रहा था क्या, कर रहा है अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट ये। हम्म, बिशप रिवर्सल आ गया ना यहाँ से, ये देखो, ये इंजीनियर्ड लो था, ये इंजीनियर्ड लो था, ठीक है, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, इसको लिया, चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी दे दिया, बट बढ़िया तो बढ़िया लग रहा है। यस, यस एग्जैक्टली, इट्स डेली प्रोफाइल न्यूयॉर्क continuation, yes, but the market were completely decoupled, so it was not like, you need to know like asset synchronization concept, today to take this trade, because if you don't know the asset synchronization concept, then it could be, you could not catch this trade, because you don't know the context, like whether it will continue to the downside or it will move higher, you don't know. So, mm. Yep. So now we have new 4 hour candle has been opened, so let's see what it does. Hmm. NQ is showing continuation, so that is good. Like you can easily, our trade can also continue its move to the upside when we don't lose, like if NQ will not lose its strength, so market will definitely reach at this area. So that's good.
Yeah, in daily profile, it's a New York continuation. See, we had created open low first. If you go to the 4-hour time frame, you can easily see open low first, 2 a.m. reversal, 6 a.m., 10 a.m. continuation. So this is this profile. In 4 hour also we get a small wick, so that's good. This will be a continuation trade. This will be a continuation candle, sorry. So I have made this trade break even. I don't want the market like reverse and take like take my SL. So I have made this trade break even. I have like exited my trade at around this area. I have exited it. It has already tapped. I don't want that, because it's already reaching at around all-time like intraday high. So usually what we see, we sometimes get a deeper retracement. So I don't want to be in this trade. Like I know that it will definitely hit this area, but let's suppose you are on the chart and you don't want to like for $10, you don't want to stay in this trade for like holding these like there is no, you can like it has already hit all-time like intraday high, so that's good. You can see that I have also exited it somewhere around this area, so that's good. I don't want to stay in this trade for like, let's suppose we get to, because you can see that it's a clean expansion. So after this we can easily get a retracement as well. So there is no need to stay in this trade for so long. That's good. Yeah, I have also heard about this कि दिसंबर में पी अच्छा नहीं होता, बट द थिंग इज दैट फ्यूचर्स में मैंने सुना है ऐसा कि फ्यूचर्स के का पी अच्छा होता है, फ्यूचर पी इज गुड. आई हैव हर्ड दिस, फ्यूचर का पी अच्छा होता है. बट 15 दिसंबर के बाद चीज़ें बेकार हो जाती हैं. 15 दिसंबर के बाद देर इज, या कुछ वो नहीं कर सकते हो 15 दिसंबर के बाद. ठीक है, तो देखो ये बढ़िया जा रहा है ट्रेड. ठीक है, तो 1:3 का ट्रेड था ये, ऑलमोस्ट 2.97. तो दिस इज गुड. Or it has a lot of room to go actually, but like at 1:3 it's done. Yeah, because after 15th of December we do have like Christmas Eve, New Year, a lot of holidays, and usually Western people go around like they do go for vacation at around these areas, these dates. हाँ, पे आउट लेके 15 दिन छुट्टी.
So it was a good trade. We waited patiently, like, we did not jump because see, when you are taking trade on 1 minute time frame confirmation, then it's better you should wait for like a continuation entry. Don't take. Let's suppose I would have taken this entry at around this area. My SL would be at around this area, somewhere at around this area. So it's better, why not take trade from here? So I could take my, like, this would not be a good SL because like, see, this is the thing which I know that we could get this sort of retracement as well. So that's why I just like $5-7 doesn't matter. So I took this trade at around this. Yeah. Mm-hmm. अभी 8:30 के अराउंड मेरे को 2-3 एंट्रीज अच्छी अच्छी दिखी थी, पता है, वाईएम में एक एंट्री दिखी थी यहाँ पे, मतलब। बट देखो, पेशेंसली वेट करने से ना क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ एंट्री ले लेता और ये चल जाती, तो ये ना एक बैड हैबिट क्रिएट कर देती मेरे लिए, पता है। बैड हैबिट क्रिएट कर देती कि यार मैं तो मतलब बिना अपने मार्केट ओपन के भी ट्रेड लेता हूँ और चल जाता है, ऐसा ऐसा करके बैड हैबिट एक क्रिएट कर लेता मैं अपने दिमाग के में। ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट गुड। इन द लॉन्ग रन आप देखोगे ये बैड हैबिट्स ना आपको हमेशा परेशान करेंगे। ठीक है, आपके अकाउंट्स ब्लो हो जाएंगे, इसकी वजह से अकाउंट्स ब्लो होंगे। आप जैसे थोड़ा सा लॉस हुआ तो आप ये चाहोगे कि चलो यार इसको ऐसे दूसरे टाइम पे ट्रेड करके रिकवर कर लेते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स होती हैं, और इसीलिए मैंने ये ट्रेड नहीं लिया आज। ठीक है, ये ट्रेड नहीं लेने का इधर रीज़न यही था। भाई 9:30 का वेट करो, यहाँ पे भी मेरे को अच्छा ट्रेड मिल रहा था एक फॉरेक्स में भी। 2-3 मंथ्स इन ट्रेडिंग? क्या बात कर रहे हो अमन? 2-3 महीने हुए हैं तो आपको ट्रेडिंग करते हुए, मतलब बहुत बढ़िया। तुम बिल्कुल सही जगह पे आ गए हो। देखो, दिक्कत क्या होती है ना ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यार अच्छी स्ट्रेटजी ही नहीं मिलती लोगों को। इतना ज़्यादा रायता फैलाया हुआ है ना लोगों ने, मतलब क्या ही बोली जाए, इतनी सारी स्ट्रेटजीज हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज, and the gurus have made it difficult. The concepts are not very vast. Like, if you will say that, like, there are only 10-15 concept. Okay, there are only ten concepts in the whole trading industry. There are only 10 or 15 concept, but the gurus have made it so much difficult for a beginner. Like, if let's suppose you are a beginner, you come to this industry and trying to learn by your own, like, you will get confused, you don't know from whom to learn and what to learn. But if you are the lucky one, then you have like arrived somewhere that is very reliable. नहीं तो अगर आप मतलब, नहीं तो जहां आप पहुंचे हो ना 3 महीने में, वहां पहुंचने में मेरे को मतलब 8 साल लग गए। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जिन, किसी को 2 साल, किसी को 8 साल, किसी को 5 साल, तो बहुत टाइम लगता है भाई, बहुत बहुत टाइम। तो इट्स गुड कि आप मतलब सही टाइम पे आ गए हो। बस स्टिक रहना इसी से, ये नहीं कि मतलब अब छेड़ना मत। हाँ, ये सही है, बढ़िया। बस इसी से स्टिक रहना। देखो, कभी कभी ऐसा होगा कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे, कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस होंगे, 4 लॉसेस, 5 लॉसेस, मुझे होते हैं यार। ठीक है, मुझे होते हैं 4-4 लॉसेस होते हैं कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, तो बट ऐसा नहीं है कि फिर एक ट्रेड आएगा 1:3, बात खत्म, लो, ब्रेक इवन हो गया जी। ठीक है, तो घबराना नहीं है, लॉसेस आएंगे। स्लोली क्या होगा ना कि आप अपने आप को ऐसे अलाइन कर लोगे ना कि लॉसेस कम हो रहे हैं, प्रॉफिट्स ज़्यादा हो रहे हैं, विनर्स ज़्यादा आ रहे हैं, और जो लॉसेस आ रहे हैं वो 1% आ रहे हैं, जो विनर्स आ रहे हैं वो 1:3 आ रहे हैं, 1:2 आ रहे हैं, 1:2.5 आ रहे हैं। तो आप देखोगे ना कि आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे तो हल्का डिप आएगा, फिर बड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है, सो ऐसे करके चलते हैं। गुड गुड गुड।
See, if I tell you a tip about psychology, then just stick to one time frame, one session. Stick to one session. Just don't open the chart. Don't try to take trade outside your trading time. This is the only thing. Let's suppose you work in a bank. Okay, so can you work for the bank at around 12 p.m. or like 12 a.m. in the night? No, you have your fixed timing. No, you go to the bank when the bank opens at around 9:30. You go to the bank, you work for around like 6 hours or 8 hours. Then you come back to your home and you don't bother about your work. So same thing applies to the trading as well. If let's suppose you open your laptop, like I open my laptop at around like 9:30, so that is my starting of the day, and from there I just after that I take the trade at around 2 hours, like 9:30 to 12 a.m. EST, and that is my trading hour. Apart from that hour, don't try to take the trade. You know, like no, I will not say that once you get experience, then start doing all the no. I have done this, and I have like lost significant amount of time, significant amount of energy as well, and like significant amount of money as well. Mm-hmm. Don't do multiple sessions. You know, sometimes once your strategy start working, no, so it feels like why don't, because when you do hindsight trading, no, you will see that, oh, I could catch this entry, oh, I could catch this entry, but what happened when you try to catch these entries in the present time, like in the live session, then your brain has limited capacity. Your brain, believe me, trading 2 hours, like 2.5 hours of trading consumes around like 5 hours or 6 hours of work. Normal day-to-day work. If let's suppose you go to college and study 6 hours, 8 hours, and you do 3 hours or 2.5 hours of trading, both are equivalent. Because your mind constantly working, you are getting adrenaline rush, you are getting emotional during that 2 hour, 2.5 hours. But when you are in college, you don't get adrenaline rush, you don't get that emotional uh, psychological issues. But in trading, you will get. So it's good that you should do only 2 or 3 hours of trading, because, and no matter how much I say, no matter how I know all these things, but I do mistakes also. Like I do also take sometimes like trades in other times, like Asian session or pre-New York, but not end well. So here we are again seeing some continuation. Mm. But see, the thing is that no, let's suppose what if let's suppose this is a continuation CIST. Stick to 9:30 to 12. If you are trading only gold, then you can trade around start around 8 a.m. EST to 8 a.m. to 12 p.m. But if let's suppose you also trade indices, then don't open the chart or don't take any trade before 9:30. कौन सा रील्स दिवाकर? No, see, here I just wanted to say some lesson. See, this is a 1 hour chart, and we get a CIST at around this area. Is it a good area to take the trade in a 1 hour chart? Let's suppose you take a CIST at around this area. Let me just mark it once again. We have a CIST, straight line, straight line, straight line, straight line. Okay. See,
So is it a good area to take the trade? We have a 1 hour expansion candle. No, this is not a good area. If you, let's suppose, try to take a trade at around this area, placing your stop loss at around this area. Next, can bro, gold is better in London then. Yes, gold is better in London or better in Asia as well. But again, you have to expand your working hour. For me, I would say don't trade for more than 2.5 hours. But if you will be doing, like, see, if you are just trading gold, not trading indices, then you can trade at around 8 p.m. 8 a.m. ES to 12 p.m. But let's suppose you just if you are not available in New York session, then you can look for Asia or London. Because we as a GXT trader, we take trades on based on drivers also. But in London, we rarely get any news driver. But in New York session, we get news drivers, and in news drivers, you will see like fire moves. A very big, nice big moves. So that's why I recommend trade around a London session. See, when market is in expansion, you can get a move from here as well. But usually, what will happen when the market is not in this sort of expansion, then the next candle might open and it may take take your stop loss and then continue it from here. So if you are taking trade in 1 hour time frame, try to take the entry in the beginning or at least at the mid of that candle. Let's suppose this is our 1 hour candle. So try to take trade in the beginning, like here, or at least here, not at around this area, because market can easily retrace and take out your stop loss. So don't take trade at around this area. Yeah, Astro. बढ़िया बढ़िया. M3 CIST at around this area, no? So that's a good place to take the trade if you have taken a trade at around this area, because because यहाँ पे क्या है ना कि आप, if you will see that, let's suppose you have taken a trade at around this CIST, then you are aligning yourself at the low of this 1 hour expansion candle. You have aligned yourself here, so that's a good place. Let's suppose if market want to take your stop loss, then it needs to form a bearish candle, then to take your stop loss. Let's suppose your stop loss is at the body, then it has to come all the way down, then your stop loss will be tagged. But if it's in an expansion mode, then I think it's good place. I had taken a trade at around in US 30. I took the trade at around this area, and yeah, I do my analysis at around like 8:30, 8 a.m. or 8:30, 8 a.m. You can say it starts as around 8 a.m. But yeah, this is a good place. So I had taken a trade in YM to catch up this leading asset NQ. I booked around 1:3 at somewhere at around this area.
बढ़िया बढ़िया, इफ़ यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड द रिस्क देन इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। इफ योर माइंड हैज, और दिस इज अ continuation signature if you ask for me. So this is a two leg, like I have done some pattern trading and then I know, and this is like measured two leg. So after this sort of a leg, we usually get a move to the upside. Let's see if we can also this time also we get a move to the upside. GU. So the thing which I did not like about like Euro USD was, it was in seek and destroy profile. So देखो, कायदे से हमको यहाँ बाइंग जाना चाहिए था, ठीक है, और ऊपर जाना चाहिए था, बट क्या मैं ऑफ पता है क्यों हो रहा था, क्योंकि एक्सपेंशन, सीक एंड डिस्ट्रॉय एंड अगेन एक्सपेंशन, तो ये एक पैटर्न होता है जब भी, जैसा सीक एंड डिस्ट्रॉय इज आई वुड से इज अ एक्सपेंशन पैटर्न, पता है, सीक एंड डिस्ट्रॉय एक एक्सपेंशन पैटर्न है। तो ये जब ऐसा हो रहा था ना, जब भी मैं थोड़ा यहाँ पे ऑफ हो गया था कि नहीं भाई बाइंग, देखो based on everything, it was looking like a buy setup to catch up this, NQ will sorry, GU will catch up these assets, तो ये सब ठीक लग रहा था कि GU कैचअप करेगा ऊपर, बट the thing which I did not like was this seek and destroy profile in euro, which was not good. क्योंकि मुझे लग रहा था ये नीचे, ये ऐसे ऐसे फेज पे है ना कि ये नीचे गिरेगी, अब ये नीचे गिरेगी ना तो इसको भी खींच देगी नीचे, तो that was not good. And here also we can see that the market had tagged, took out these relative equal lows, but not, this is very shallow manipulation. This is, usually when we get this sort of manipulation, the market again continues to the down and then takes out these lows again, but here we did not get any further manipulation. So yeah, it is just the probability which played out, we cannot do anything. Short on GU, शॉर्ट्स, अरे सेल में कैसे लॉस हो गया, फिर तो सेल तो गिर रही है अच्छी, मतलब सेल कहाँ कर दिया था आपने, क्या इधर कहीं सेल किया था क्या, कहाँ शॉर्ट किया था ये, तो अगर मतलब शॉर्ट किया हुआ था या तो यहाँ किया होगा या फिर इधर कहीं किया होगा, मतलब कहाँ किया था भाई, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया होगा तो यहाँ पर से किया, अच्छा अच्छा ऐसे किया था क्या, ये था क्या, ऐसा कुछ था या ऐसा कुछ, हाँ ऐसा रहा होगा ये ना, हाँ तो भाई ये क्या कह सकते हैं, इट इज जस्ट द प्रोबेबिलिटी विच प्लेड आउट, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, अगर ये वाला था तो ठीक है। 9 AM के अराउंड, हाँ वही यही वाला, यही होगा ना ये, या थैंक्स मैरियम। We had a nice, if you do all the analysis, then all were pointing us that we can get a move to the upside, because let's suppose here, see, this is the red line which I have marked in Euro USD. I have marked the same red line. Okay, you can send it on Telegram. I don't think I will be live for so long, like I will be ending my live stream in like 5-10 minutes. See, this is the same red line, this is the same area which I have marked in euro, and see, this is the same area. So here we had two things, like we could get a SMT break, like we could get a SMT break, market could continue its move to the downside, or we could get a true reversal. So here we were seeing some sort of V, like a V formation, at around this area. Market continued its move to the downside and then showing some V formation. So it was like I was also thinking that like market can continue its
So I was also thinking that we could get a catch-up game, like GU could catch up this Euro USD. But the thing which I did not like was that seek and destroy profile. It was hinting me that, you know, seek and destroy profile. It was hinting me that market could do a SMT break and it can continue its move to the downside. And if you look at the price action of this candle, no, see, if you are looking in 1 hour time frame, so sometimes what will happen, if you look inside that leg, you will see another price action. Like, see, here we are seeing some sort of V formation, but when we go on 5 minute time frame, what we will see, it's a retracement. It's a complete retracement, not a continuation signature. It's not a V-shape reversal. V-shape reversal is like this: market comes down, expansion met with expansion, but this is not an expansion. It's a complete clean retracement, which was also hinting me that we can get a move to the downside as well. So yeah, a lot of things were there. So that's why I did not try to take the trade. So I take trades in like Euro USD or gold when what I have experienced from my what I have known from my experience is that when I am very much sure about gold or forex, then only I take the trade in these assets. Otherwise, I will stay away from these assets. Because it will take time, like I have not traded it a lot, so it will take time to understand the price action of, every asset has their own characteristics. So if you try to trade in forex or metals as well, so slowly you will get the characteristics of all these trades. But in the beginning, try to just to do the analysis. Don't take the trade. Slowly you will start seeing the characteristics. You know, you will start to know all the moves, like where GUE is lying on the chart, on the higher time frame, on the intermediate time frame. You will start seeing all. Oh, teri gaya. It did not work. Mm-hmm. This is why I was saying, so no, at this place I was telling, like, see, many people would have taken the trade at around this area. Many people, many people would have taken the trade. But what I was saying, that let's suppose we have a 1 hour candle, so don't try to take the trade at the top. Try to take the trade at the bottom or at the middle, at max, not at the top. I have taken a lot of my stop losses when I take the trade. Let me just check. दिवाकर. तो लोअर टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन कहाँ किया था आपने? वेयर हैव यू टेकन, लाइक, इन लोअर टाइम फ्रेम? You had taken trade in 30 minutes? Was okay, you have taken trades in 30 minutes, I think. No. Hmm. Just give me a second.
सॉरी। हम्म 3 मिनट 5 मिनट, तो 3 मिनट 5 मिनट का चार्ट आपने भेजा नहीं अब। 3 मिनट 5 मिनट का चार्ट क्यों नहीं दिख रहा मेरे को? ये है 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर डेली, 4 ही चार्ट दिख रहे हैं मेरे को। ओके 5 मिनट, ओके ओके ओके, देख लिया, सॉरी सॉरी, देख लिया देख लिया। हाँ 5 मिनट देखा। हम्म, why it's looking different on? हम्म, यार अलग क्यों लग रहा है यार ये चार्ट, मतलब 5 मिनट, कितना टाइम क्या हो रहा था यार? 8:45। 8:45 यहाँ इस कैंडल पे। हाँ 8:45, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ यहाँ यहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, ठीक है पकड़ लिया। यहाँ पे ना, ये हाँ ठीक है एग्जैक्टली, ठीक है सॉरी। तो यहाँ आपने ट्रेड लिया था। हम्म। देखता हूँ, 2 मिनट रुक जा, थोड़ा कुछ, थोड़ा चाउमीन खा लूँ पहले। ठंडा हो जाएगा नहीं तो। See, the thing is that, yeah, I got your entry. See, once the market had hit this key level, we saw a violation of this fair value gap. So why you take the trade at around this area? We had already invalidated this fair value gap. So let's suppose you wanted to sell again, then you must wait for at least the market to like hit another key level, or if you have taken see, here also we did not respected all these things, you know. If let's suppose you have taken this trade based on advance premium and discount, let's suppose. Mhm. But again, the thing is that the market has already like taken its drawn liquidity from the bottom. It has taken the drawn liquidity from the bottom. It went up. We did not see any two-stage crack in correlation. Let's suppose you have taken advance based on advance premium and discount. Let's suppose we have, sorry, we are in a deep premium and we wanted to sell. So the first issue which I like it has invalidated this fair value gap, and this was the weakest asset, no? So if the weakest asset has invalidated a fair value gap after hitting this key level, this was a first red flag for me. And another red flag for me was that it has formed a V-shape reversal again, you know. So if let's suppose I want to sell, I want at least a two-stage crack in correlation. So at least you should wait for at least two-stage crack in correlation. Yeah, yeah, Mariam. You can do that. We did not have any PSP or anything, or like V-shape reversal.
why you take the trade after this V-shaped reversal, invalidation of this fair value gap, and you take the trade at around this area. Like, no, it was a complete mess trade, I would say. Here also, let's suppose if I look at this trade, the market had already reached, market had already reached at the close proximity. See? Here the market had already reached at its around close proximity to these lows. We had already failure swings resting below. So I don't think we should take the buying entry at around this area. Let's suppose if you do the analysis of USD, US dollar, then also we were in the close proximity of these failure swings. Market had came all the way down. So I don't think this is a valid trade to take buying entry at around this area. If you look at this, we had also a change in state of delivery. So no, not good trade. Did you get your mistake? Like, where was your mistake? And this is, I don't know, is there any tweet or what? Like, why this thing happened? This is the biggest candle for like past 2-3 days. This is the biggest candle for like Monday, since Monday. This is the biggest candle. I don't know, is it because of some news or some tweet? I don't know. Like, there is no news today, so I don't know what triggered this kind of move. In all assets, we got this sort of move. There must be some tweet, I think. I know, like, there must be some news or some tweet. Usually don't get this sort of move, because in metals also we got, in silver also we got this move, in indices also we got the move. So I don't know what. So here we are seeing some sort of this is looking good. Okay. So we have some two stage, not two stage, like SMT fill, or not say two stage. Yep, we do have. If you look at this 1 hour time frame, then bearish, we do have a two-stage crack in correlation, and we do have PSP 1 hour. I think yes. See, SMT fill higher highs, and this is a basically a strength switch. So this was again one good opportunity at around this area. 30-minute again, like this was a good opportunity. Let's suppose if we take a trade at around this area, placing our SL at around this area, 1:2 will be sufficient. Placing our stop loss at this low. I don't want to take the trade, but this was a good trade, because see, we have a bias. We have like 30-minute. If you can see in the 30-minute, we have a nice fair value gap, market rejecting from that fair value gap. Okay, and we can see we have a SMT fill between RTY. We have a two-stage crack in correlation as well. So in 1 hour, you can see 1 hour here, we have two-stage crack in correlation. This is bullish, this is bearish. Okay, and this candle took the low in RTY. See here. So this is looking good. This is looking good. And this was a weak asset, so we are seeing a strength switch.
This is looking good, but if you have if you have made already like 2-3 hours, then there is no need to jump on every trade. Wait for another day. Let it be. Yes. Not today. Like we cannot expect that today NY will reach at around this area. No, not today. And I don't think the NQ will also reach at around this area today. I don't think. This was a good trade, I would say, at around this area. So anyway, like as the time passes, like let's suppose you are at around like 11 a.m. So don't try to take trades based on 1 minute. When it's a volatility time, then taking trades in 1 minute will be okay. But now when it's a off market, like 11 a.m. past 12 p.m. So take trades based on like three. Yes, yes, yes. Maybe can be double purge. Let it be. We have taken our piece from the market, so there is no need to again look for, don't be greedy, don't try to take every move. So this was a good move although, but still. Okay, talk to you guys tomorrow. Bye bye, happy trading. Don't trade outside your session. Don't take bigger risk. Don't increase your position sizing. Take 1 or 2 losses max in a day. Yeah, happy trading.